Today we are going to see validity of the argument. Okay, and we will see truth table method. Okay, so first let us see what do you mean by a valid argument. Okay, when an argument is valid, can anyone tell me, can anyone guess what is the meaning of a valid argument? What could be the meaning of a valid argument? Valid means what? So you have an argument P1 and P2 and P3 and so on, Pn, and you have some conclusion C. Okay, what are these called? What are P1, P2, P1, Pn called? Premises, right? And this is called as conclusion. Okay, so anyone can tell me what is a valid argument? Anyone can guess? I guess if all these propositions are true. Valid argument means, see, you are, what you want to say, if P1 and P2 and P3 then C, right? Isn't it? Yes, ma'am. If P1 and P2. So if P1 and P2, how should I write that? If P1 and P2 and P3 and so on and Pn, this implies C. Okay, so this is my P implies Q type. This is a conditional statement, isn't it? Argument is nothing but P implies Q type conditional statement where I am considering conjunction of various numbers of premises P1 and P2 and Pn, and I have certain conclusion with me. Okay, so if this is a tautology, okay, if conjunction of all premises, its conditional statement with given conclusion becomes a tautology. That means when you prepare the truth table of this particular compound statement, if that compound statement becomes a tautology, then, so if this is a tautology, then given argument is valid. Are you writing it, girls? Then given argument is valid. Okay, are you getting it what I'm saying? Yes. This is a very simple way to, so this is my P, suppose this is my P and this is my Q. I am taking P implies Q. Okay, so the given argument is a tautology, then it is valid, otherwise it is invalid. Okay, otherwise it is invalid. Now, when this will be tautology, can you tell me? When this P implies Q thing will be a tautology? P implies Q का truth table क्या आता है बताओ? What is P implies Q truth table? T F F otherwise T. This is P, Q, T, T, F, F. This is T, F, T, F. So what is P implies Q? T, F, F T T. right? So when the second statement is false, that is when Q is false,
P implies Q is false. It is not a tautology. Otherwise this would have been a tautology, right? Are you getting me? Yes, ma'am. So when I'm considering this particular conditional statement, P implies Q, this is a tautology. मतलब क्या है कि ये सारे लोग ट्रू है, P is true but conclusion is false. जब ऐसा होगा तभी हमारा आर्ग्यूमेंट F आएगा ना, आंसर है ना, तब ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी, राइट? जब सारे प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है, तो P implies Q आएगा फॉल्स, राइट? ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ट्रू कब होता है? व्हेन कंजंक्शन इज ट्रू. कंजंक्शन का टेबल कब ट्रू होता है? P Q कब ट्रू होता है? बताओ जल्दी. when both are true only then, right? So अगर आप कंजंक्शन ले रहे हो, if you are taking conjunction of different number of premises, then when this conjunction is going to be true, when this conjunction is going to be true, When all statements are true. when all my premises are true, T and T and T and T है, तब जाके ये T होगा ना. इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, कोई भी एक प्रीमाइस फॉल्स हो गया, तो ये कंजंक्शन ट्रू होगा क्या? होगा क्या? नहीं. दैट मीन्स व्हाट वी आर चेकिंग अल्टीमेटली, P implies Q अगर टाउटोलॉजी होनी चाहिए, if this you want to be a tautology, then this is true. When this will not be a tautology, when this will become false, right? When P implies Q will become false, P implies Q will not be a tautology, will not be true. So this will become false only when P is true and Q is false, right? Otherwise P implies Q is true everywhere. Yes or no? Right? So, and when this P is going to be true, when all my premises are true, when all my premises truth value is true, that time my P is going to be true, but conclusion is false, then argument is invalid. Do you understand it? What we want to say ultimately? All my premises are true, but conclusion is false, then argument is invalid. Okay, all the premises are true. We have seen this particular definition first of all, right? Yeah. So these are equivalent statements, you can say. P1 and P2 and up to Pn gives C is valid when P1 and P2 and Pn implies C is a tautology. This is one definition, okay? This is very simple definition. दूसरी definition क्या है equivalently? We have if all premises P1, P2 up to Pn are true and the conclusion is also true, then the argument is valid. Do you understand this? Yes, ma'am. देखो ना, तुम्हारा ये है ना, इसे अगर मैं कैपिटल P कहूं और इसे मैं कैपिटल Q कहूं, तो P implies Q, मतलब ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो ट्रू implies ट्रू क्या आता है? ट्रू आता है. ओके. हाँ,
Okay, and if all premises P1, P2 up to Pn are true, but conclusion is false, then what? Then the argument is invalid. ओके, क्योंकि देखो P implies Q कर रहे हो आप एंड Q आपका फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो ये आपको हमेशा F देगा. आर यू गेटिंग इट? हाँ, वी विल टेक वेरी सिंपल एग्जाम्पल यूजिंग ट्रूथ टेबल. तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी ट्रूथ टेबल में क्या करना है. ओके, what you can do using truth table. One way is you can take this conditional statement of all premises and conclusion, and the other way around, do not take this. Don't unnecessarily make one more this thing. Okay, so एक word problem लेते हैं हम, so that you will understand it how to convert first of all. Just a minute, girls. Yes, girls. So let us have one simple example. Okay. Yeah, I'm taking an argument. If I study hard, then I get distinction. This is my first premise. Second premise is I study hard. Therefore, I get distinction. Okay, so how to recognize which statements are premises and which statements are conclusion? Can you tell me which is the conclusion part here? Therefore, I get distinction. See, whatever comes after the words like therefore, so, thus, etc., the whole thing is your conclusion. Okay, this is your conclusion. And before these words, therefore, everything is your premises. Now, how many simple statements you can find out from this? I want simple statements, propositions. study hard. I First one I will take, I study hard. Right. Second, I get distinction. I get distinction. Is there any other statement No. involved? Statement means simple statement. Proposition. Nahi hai na? Yes. Now let us convert the given thing into symbolic form. If I study hard, then I get distinction. So how will you write it symbolically? If you. If P then Q. So this will become P implies Q, right? Now what is the next one? I study hard. Okay, that is another premise. So it is P. And whatever comes after the word therefore, I have to put the symbol like this. So I get distinction, that is Q. Do you understand it? So you have to identify the propositions from the given argument. Propositions means simple statements, not compound statements. Do you understand this?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are your premises. Okay, these are your premises, and this is your conclusion. Okay, I can call this P implies Q as premise 1. This is P1, and this P is P2. Do you understand it? So what I am supposed to take? I am supposed to take P1 and P2. Do you understand it? I am supposed to take conjunction of the given premises. ये समझा है क्या सबको? यहाँ पे 3 अलग premises नहीं लिखने हैं, P, Q and P. Do you understand it? This is a compound statement. That is your first premise. That is your second premise. And whatever comes after the words therefore is your conclusion. So what I am supposed to take? Girls, do you understand? You are supposed to take conjunction. तो हमें ये करना है. Okay, P1 and P2 implies Q. Okay, so let us prepare the truth table here itself. As it is very small, I can prepare the truth table here itself. Okay, see, my first premise क्या है? What is my first premise? P implies Q, right? Q. तो मुझे कितने लगेंगे यहाँ पे? मुझे P लगेगा, मुझे Q लगेगा एंड P implies Q लगेगा. बस इतना ही लगने वाला है अभी फिलहाल. फिर बाद में क्या लगेगा? P implies Q. ये P1 है मेरा एंड P2. मतलब मुझे क्या करना चाहिए? P implies Q एंड Q भी बनाना आना चाहिए, राइट? ये भी चाहिए मुझे कॉलम. Isn't it? Are you getting it? Yes, ma'am. हाँ, बताओ. T T F F, right? T F. Yes. Now what is P implies Q table? TFTT. T F T T. Now I have to take conjunction of these premises. मेरा पहला premise ये है P1 and this is my second premise. P1 and P2 मुझे करना है अभी. P1 and P2. So P implies Q, this column and this column. इसका conjunction लेना है. तो T and P. Yes. P2 is P ना. Ma'am, and Q क्यों आएगा? And P Sorry, आएगा ना? sorry. Yeah. So this is your P2, right? So आपको कंजंक्शन लेना है P1 और P2 का. So T and T. पहली रो देखो, फर्स्ट रो देखो, ये लेना है इसका कंजंक्शन आपको. फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम. So what is T and T? What is T and F? False. False and true? False. False and true again? False. Right? अभी क्या करना है आगे? हमने इसका कंजंक्शन तो ले लिया, ये पार्ट कर लिया हमने. अभी क्या करना है? इसका इम्प्लीकेशन लेना है, कंडीशनल स्टेटमेंट लेना है कंक्लूजन के साथ, राइट? तो और एक कॉलम आना चाहिए ना हमारे टेबल में. यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, Yes. तो मैं फिर से ये लिखती हूँ पूरी चीज. P Q, P implies Q, P implies Q and P, और फिर है हमारा P implies Q and P, and that implies your conclusion, that is Q. इतने सारे कॉलम्स मेरे हैं. ओके, so first is T T F F, T F T F, T F T T. ये क्या आया था हमारा? T F F. Right. So this is my P1. This is my P2. So I have taken here P1 and P2.
Now I am taking P1 and P2 implies Q, right? So अभी इसका ये ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो बताती हूँ आपको फिर से. P implies Q में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ गर्ल्स, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, यहां से यहां. समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है क्या? This whole thing is your P now and this is your Q now. So P implies Q टेबल बताओ अभी उल्टा ऐसा. T implies T. पहला है T implies T. What is that? True. True. दूसरा क्या है? F implies F. समझ में आ रहा है क्या? F implies F. What is that? True. Then F implies T. True. And F implies F. That is also true. So what we have seen here? Tautology. So P implies Q and P implies Q is a tautology, right? And therefore P implies Q comma P gives Q is a valid argument. Do you understand this? This is one way, but there is a flaw in this case. What is that? Flaw means it's not wrong. Here the premises were small in number. You had only 2 premises here, right? So it was easy for you to take conjunction. If I have 10 premises, then is it a very good idea to take conjunction of all of them and then take its one way implication with conclusion? Is it a very good idea? Can anyone tell me? Yes, I'm asking you Ma'am. something. No, ma'am. We Bolo. have to take the conjunction of P implies Q and P, na? But we have taken P implies Q and Q. नहीं, कहाँ लिया ऐसा? The fourth column. नहीं, फोर्थ कॉलम P के साथ ही लिया है ना, देखो P के साथ ही लिया है मैंने. पर solve करते वक्त we have considered Q. हाँ? अरे बाबा, ये P एंड ये एंड P ही है ना, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दिख रहा है क्या? P implies Q and P. समझा के नहीं? नहीं मैम, वो पीछे मैम हाँ वो पीछे की स्लाइड है ना. हाँ. नहीं वो नहीं, दूसरी थी. हाँ हाँ, यहाँ पे लिखा है एंड क्यू. हाँ, वो मैंने गलती से लिखा था ना, मैंने किया ना बाद में, वो यहाँ पे P चाहिए. नेक्स्ट इसमें मैंने किया ना वो करेक्ट. समझा है क्या? अभी यही प्रॉब्लम मैं आपको सिखाती हूँ दूसरे तरीके से. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो ना फटाफट. हो गया? यस मैम. अभी यही प्रॉब्लम करते हैं दूसरे तरीके से. मतलब क्या? ये जो मैंने ये 2 कॉलम्स बनाए हैं ना, ये 2 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें. तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा.
3 कॉलम्स में ही खत्म हो जाएगा, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, बस इतने ही कॉलम्स बनाने होंगे आपको। कैसे, देखो हमारा आर्ग्यूमेंट था P implies Q, comma P, and the conclusion is Q, right? So just make these 3 columns. So whatever required number of columns you make. So here we require only 3, right? So T, T, F, F, T, F, T, F, T, F, T, T. Now, what you have to do, from the given truth table, you find out that row where all your premises are true. Do you find such row? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? Yes, ma'am. हमने क्या किया था पहले मेथड में, देखो हमने पहली डेफिनेशन यूज की थी that P1 and P2 and Pn take conjunction of all the premises and implies conclusion ले लो, वो tautology है, then you say that argument is valid. Now I am trying to reduce your work. हम हमारे एफर्ट्स कम करना चाहते हैं. How? We will not take that conjunction and that conditional statement. We will not check whether that conditional statement is a tautology. Instead of that, see, the same way we are doing what we want to say P implies Q and P, this whole thing implies Q. This is a tautology. हाँ, तो ये टाउटोलॉजी कब होने वाली है? जब ये जो आपका प्रीमाइस है पूरा, कंजंक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये टाउटोलॉजी होने वाली है. करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? Yes. और ये टाउटोलॉजी कब होगा? ये टाउटोलॉजी कब होगा? जब ये P implies Q ट्रू होगा और ये P भी ट्रू होगा. T and T will be T, right? करेक्ट. बाकी सब जगह पे कंजंक्शन फॉल्स होता है. जब सारे प्रीमाइसेस ट्रू होंगे, सारे स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, तभी उन सारे स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन ट्रू होगा, अदरवाइज कंजंक्शन फॉल्स होगा, राइट? तो मैं क्या करती हूं, आई एम फाइंडिंग अ रो. व्हाट आर माय प्रीमाइसेस हियर? दिस इज माय प्रीमाइस 1 and this is my premise 2 and this is my conclusion, right? So now I will find a row where my premises are true. मेरे सारे premises true है, तब जाके premises का conjunction भी true होगा और मैं देखूंगी conclusion का हाल क्या है वहां पे. What is happening with the conclusion? Do you understand it? So tell me the row where your premises are true. This is true here. Your premise 1 is true. And your premise 2 is also true, right? Girls, are you there? Yes, ma'am. So ये premise true है and this premise is also true, right? So true and true क्या होगा? What is true and true? True होगा ना? तो इन दोनों प्रीमाइसेस का मैं अगर कंजंक्शन लूंगी तो वो ट्रू होगा, लेकिन कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज हैपनिंग विद द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू. आर यू गेटिंग इट? बाकी के लोग बोलो थोड़ा सा. हाँ, तो बोथ प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू. कोई और ऐसी रो है क्या जहां पे दोनों प्रीमाइसेस ट्रू है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रू है P implies Q, बट P इज नॉट ट्रू, राइट? यहाँ पे P implies ट्रू है लेकिन P इज नॉट ट्रू, तो हम ये रो कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे P ट्रू है लेकिन यहाँ पे
सॉरी ये P ट्रू है लेकिन P implies Q false है, so we will not consider that. What is happening in this row? P implies Q is also true and P is also true. Both my premises are true. And what I am observing, that my conclusion is also true. Huh? Both premises. So आपको क्या लिखना है in row 1? Both premises are true and conclusion is also true. Therefore argument is valid. समझा है क्या? सपोज आपको ऐसी एक रो मिल जाए जहां पे सारे प्रीमाइसेस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो आप क्या कहोगे? आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड. समटाइम्स इट हैपन्स इन द टेबल कि ऐसी दो रोज मिलती है कि एक रो में क्या होता है, ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू. बट सेकेंड रो में ऐसा होता है कहीं पे कि ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स. So this is a contradictory situation and therefore argument becomes invalid. यहाँ पे हमें एक ही ऐसी रो मिली है जहां पे both my premises are true and my conclusion is also true. Therefore argument is valid. Sorry मैंने invalid लिखा गलती से. Sorry. Argument is valid. Is that okay? Have you understood this concept? Yes, ma'am. ओके. सो आपका होमवर्क है अभी आपका होमवर्क है, आपने ट्रूथ टेबल से ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है चेक करना है. चेक वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट यूजिंग truth table method. Okay, truth table method. दो दे रही हूं मैं. पहला है P if and only if Q, comma Q and the conclusion is P. यहाँ पे आपको दो ही स्टेटमेंट्स है P Q. P and Q. This is the first one is P and Q implies R. ये पहला प्रीमाइस है आपका. दूसरा प्रीमाइस है Q and negation R. ये थोड़ा सा हार्ड है. And the conclusion is negation P. Okay. So premises are only two in both. This is your P1. This is your P2. And this is your conclusion. Here also this is your P1. This is your P2. So respectively you have to make the truth table. Okay. Yes, So, ma'am. yeah. Have you written the homework? Yes.